Good morning, friends. I am Pankaj Joshi from Jaipur. Welcome you in our segment Motivation Lecture on the YouTube channel Apeksha Online English Classes. Today we will take a dynamic name of the tree which is known as mountain man in the world, a common man of the flesh and trade, a common man of the, you can say, normal person, not a extraordinary person, but he had engraved a golden history in the world by his firm determination, diligence, and his passion. He is an example of indomitable name. He has inevitable history or name in the world history, and he is known as mountain man in all over the world. He is a common man. He was a common villager. He was a ordinary man. He was man of state or nothing. But due to some reason, due to the emotional shock, he had done an impossible task into a possible work. इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए असंभव था. He had broken a mountain with a hammer and a chisel within few years by his firm determination, which is an impossible task for an ordinary person, or not only ordinary person, for the machines and for the mechanism also. But due to his firm determination, he had done this impossible work. He had done this impossible work into possible work by only a chisel and a hammer. He had broken a enormous, a titanic, a voluminous mountain within 22 years due to some emotional attachment. Dashrath Manjhi. Dashrath Manjhi was his name. He had engraved a diamond history in the world and had an indomitable, inevitable, incredible name in the world. If we can learn numerous things from his life, if we are preparing for, gearing up for the competition, we can learn that never give up in the life. Everything is possible in your life, but the requirement is your firm determination, your willpower. If you have iron will, you can turn the tide. You can turn every impossible thing into possible thing. You can turn the tide if you have the iron will. Dashrath Manjhi was a poor person of the village, but due to an untoward incident, his wife fell on this mountain and died on the spot. Due to this emotional jerk, that person had taken a chisel and a hammer in his hand, and he started breaking this mountain. And the people called him a lunatic, a mad, a crazy person, and the people used to make fun of his lunacy. But he had not given up this task, this Himalayan task. He had not given up his passion. He continued to do his work without any pause, without any hesitation, without any care, without anything. And after 22 years, he had broken this mountain. And nowadays, the people use this road. This road is known as the Dashrath Manjhi Road, and that person known as mountain man in the world. So if you are a competitor, if you are a, you can say, preparing for the exam, competition, for your goal, for your life, for your target, for your bullseye, then you should learn the numerous things from the life of Dashrath Manjhi. Dashrath Manjhi, you can say, change his life without any selfishness. He had no selfishness to break this mountain. He had a motive that I will break this mountain. मुझे इस पहाड़ का गुरूर तोड़ना है. सिर्फ इतना सा उनके दिमाग में था, क्योंकि इस पहाड़ पर उनकी पत्नी गिरकर उनकी जो है डेथ हो गई थी. ये पहाड़ का गुरूर मुझे तोड़ना है, कि इस पहाड़ के गुरूर ने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया, तबाह कर दिया. तो एक दिन मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है. तो वही मेंटलिटी लेकर आप चलेंगे कि जो भी कंपटीशन है, जो भी पेपर है, जो भी आने वाला पेपर है, उसका आपको गुरूर तोड़ना है और कुछ नहीं करना है. उस गुरूर तोड़ने के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम को चाहिए वो आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है. आपका बाधाओं में रास्ता बनाना है, रास्तों में बाधाएं पैदा नहीं करनी है. बाधाओं में रास्ता बनाना है. आपको जो भी बाधाएं हैं, जो भी अवरोध हैं, उन्हीं को अपने वेपन्स बनाने हैं, उन्हीं को अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं. बाधाओं के सामने सरेंडर नहीं करना है, एक्सक्यूजेस क्रिएट नहीं करना है. क्यों? एक्सक्यूजेज आते रहेंगे, लेकिन जीवन कभी
एक्सक्यूज़ नहीं मांगती है। जीवन हमेशा जो है रिजल्ट मांगती है। यदि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है तो दशरथ मांझी की तरह एक पैशन, एक जुनून, एक क्रेजीनेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। और वो यदि पहाड़ को तोड़ सकते हैं तो आपको तो एग्ज़ाम का, कंपटीशन का पहाड़ तोड़ सकना है। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा मोटिवेशन है, ये दशरथ मांझी का मोटिवेशन है। ज़िंदगी में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको जीवन में वो सब कुछ उतारना पड़ता है। यदि आप किसी को पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आपके दिल को टच करती है तो आपको उसको ज़िंदगी में उतारना है। यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा प्रेजेंटेशन है। यदि आपको मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसे शेयर करें ताकि हम और अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे। कायनात में इतिहास रचो कुछ ऐसा, कायनात में इतिहास रचो कुछ ऐसा कि कायनात इतिहास रचना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच।